इधर बिहार के पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी के पटना में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आखिर मान लिया है कि वह अकेले नरेंद्र मोदी को हराने में सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें इसके लिए सहारे की जरूरत पड़ती है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एकजुट होने वाली ये विपक्षी पार्टियां राष्ट्र के ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। That those who are flummoxed by the strategic achievements of the Prime Minister's visit seek to denounce a democracy wherein 20 political parties that are currently serving the interests of India and Indians. Those who want to deflect attention from the Prime Minister's personal efforts undertaken in strategic cooperation in defense, in artificial intelligence, in the ecosystem of semiconductor assembly lines, in critical mineral engagements, would like to raise the minority bogey. I will only say this: as the general elections come closer, such political gaslighting is expected. What I am grateful for is the Prime Minister's steadfast focus on issues that are critical to Indian economy.